We start with the basic physical quantities, right? Basic physical quantities. We have here the basic physical quantities such as length. We have mass. Okay, we have what else? Time. Okay, or anything else that you can suggest? What are the basic physical quantities that we have? Huh? No. It's a derived quantity. Temperature. Temperature. Very good. Temperature is a basic physical quantity. Mass हमने लिख लिया, ठीक है? And what else? Electric current. Very good. इसको हम temperature भी कहते हैं. इसको हम thermodynamic temperature भी कहते हैं. It's more convenient to write it as thermodynamic temperature. Then we have electric current. Okay, these are the 5 basic physical quantities that we have. Okay, and एक दो और भी हैं लेकिन they are not in your syllabus. एक amount of substance है which is mole, and there is another one intensity. ठीक है, आपके पास जो होती है, right? But they are not. जी, luminosity, उसका luminous intensity जिसे कहते हैं हम, right? Luminous intensity हम उसे कहते हैं, but they are not included here, right? किससे? हाँ जी, candela, उसका unit candela होता है. That is luminous intensity. They will never ask you. ठीक है, that is not included. So we have length, mass, time, thermodynamic temperature, and electric current, right? As you can see here, that these are the basic physical quantities that we are doing, right? ठीक है, ये हमारे पास basic physical quantities हैं. अच्छा, उसके बाद we have their SI units. What is the SI unit for length? इसके SI base units क्या है? Meter. That is meter. What about mass? Kilogram. That is kilogram. Time is seconds. Second. Temperature is Kelvin. Kelvin. It's Kelvin. It's not degree Celsius. कुछ students इसको degree Celsius लिख देते हैं. That is wrong. It is Kelvin. और electric current is ampere. अच्छा, इनके symbols आपको नजर आएंगे. This is small m. This is kg. S. अच्छा, ये होता है capital K. सिर्फ कैपिटल K होता है, के साथ कोई डिग्री वगैरह नहीं होता. ठीक है, और ये आपके पास कैपिटल A है. तो these are the basic physical quantities that we have, and these are their SI base units along with their symbols. जो है वो ये तो हमारे पास basic physical quantities आ गई. उसके बाद हमारे पास आती है prefix. ठीक है, prefix क्या होते हैं? Any idea? जो आपके पास स्टार्ट में होते हैं. फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में नैनो. होगा. ठीक है, और Kilo. सेंटी, मिली, नैनो. सेंटी, नैनो, माइक्रो, किलो, डेसी, स्टफ लाइक दैट, राइट? ये हमारे पर प्रीफिक्सेस होते हैं. दे कम इन द बिगिनिंग, राइट? सो राइट हियर प्रीफिक्सेस. And we have here, for example, 10 raised to power 9, that is giga, and the symbol for giga is capital G. So if you have 5 into 10 raised to power 9 bytes, right? That is 5 GB.
5 GB, right? ठीक है? Then we have mega. That is capital M. Megajoules. ठीक है? Megajoules means 10 raised to the power 6 joules. 10 raised to the power 6 जो हो आपको मेगा होगा. ठीक है? जैसे आपके पास 4 into 10 raised to the power 6 का मतलब है 4 मेगा. अगर 4 into 10 raised to the power 6 joules of energy है, आप इसको पढ़ेंगे आगे जाके. Joule is a unit for energy. You'll study that. That is 4 mJ, right? समझ आ रही है? Then we have kilo. ठीक है? 5K likes on Instagram means 5,000 likes on Instagram, right? So kilo is 10 raised to the power 3. ठीक है? So 2 into 10 raised to the power 3 का मतलब है 2 किलो. अगर ग्राम्स है तो 2 किलोग्राम्स हो जाएगा. ठीक है? 2000 grams is 2 kilograms. या किलोमीटर्स है तो अगर ये मीटर में लिखा हुआ है तो ये असल में हो जाएगा 2 किलोमीटर्स. ठीक है? समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अच्छा, then we have deci. What is deci? 10 raised to the power minus 1. I can write here small d. ठीक है? Decimeter का मतलब है 10 raised to the power minus 1 meter. 10 raised to the power minus 1 stands for deci, 1/10 of that something. Then we have centi. That is 10 raised to the power minus 2, and we write it with small c. सेंटीमीटर क्या होता है? 1/100th of a meter. मतलब आप 10 raised to the power minus 2 मीटर कर रहे होते हैं ना. सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इसके इक्वल होता है ना. 1 centimeter is 1/100 meter. Centimeter, right? We write it as centimeter. 10 raised to the power minus 2 meters. 1/100th meter. ठीक है? Is that clear? Then we have 10 raised to the power minus 3, which is milli. We write it as small m. Millimeter, 1000 millimeter का मतलब होता है 1 मीटर. क्योंकि आपके पास देखिए 1,000th of a meter means 10 raised to the power minus 3 meter. 1,000th of a meter means 10 raised to, ये ऊपर चली जाती है ना पावर. So this is 1 millimeter. 1/1000 जो मीटर होता है ना वो 1 मिलीमीटर होता है. समझ आ रही है? This is something that you should know. Then we have 10 raised to the power minus 6, which is micro, like this. Two micrometer means 2 into 10 raised to the power minus 6 meters. ठीक है? This is micro is u mu. इसको mu कहते हैं. It's like आप u लिखें u, उसके साथ थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर लें. It's mu. इसको प्रोनाउंस करते हैं mu. We call this mu. It's a Greek letter. उसके बाद हमारे पास आता है 10 raised to the power minus 9, which is nano, small n. ठीक है? Which means we can write here 5 nanometer, which means 5 into 10 raised to the power minus 9 meter. Or you can also write here for example 5 nanojoules means 5 into 10 raised to the power minus 9 joules. ठीक है? तो ये आपके पास different prefixes हैं. ठीक है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पे.
और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट स्केल। आई एम मूविंग हियर फ्रॉम, ये मैंने आपको अभी प्रीफिक्सेस बताई हैं और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं, और अब मैं स्टार्ट करूंगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से, फिर हम चलेंगे लेंथ पे। विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देन विल टॉक अबाउट मास एंड वॉल्यूम, एंड विल गो ऑन लाइक दिस, ठीक है। लेट अस बिगिन। सो scalar quantities, right? There are two types of quantities that you will study thoroughly, and there are scalars and vector quantities. We'll talk about the how to add the vectors, right? वो भी हम देखेंगे। Scalar quantities को तो add करना बहुत आसान है। So first of all, I'm going to talk about scalar quantities. They have only magnitude and value, right? ठीक है। Scalar quantities are those quantities which have magnitude only, right? They don't have any direction. So what are scalar quantities? Scalar quantities, yes, I'm going to ask you, are physical quantities which have the magnitude only, right? They do not have any direction. Okay? They do not have any direction. For example, 50, ठीक है, 50 एक सिर्फ वैल्यू है आपके पास। 50 मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड्स की। अब इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड और वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इट्स स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओनली द वैल्यू हियर मैटर्स और मैग्नीट्यूड मैटर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ठीक है, सिर्फ देखें 50 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कोई आपको डायरेक्शन नहीं पता। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं, आप क्या बता रहे थे? ठीक है, और mass, length, distance, good, or yes, distance is a scalar quantity. We have Times. speed, time, we have temperature, Electrical field strength. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका स्केलर नहीं है, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं करेंगे आप, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, not electric field strength. Electric field strength is something that you'll study later on at grade 11. 10 में पढ़ेंगे आप। Yes. Speed हो गया, time हो गया, temperature हो गया। Work is a scalar. Work is not a vector. ठीक है, work done is a scalar quantity. Then we have energy. All sort of energies are scalar. Gravitational, kinetic, chemical, any sort of energy that you experience is a scalar quantity. We have electric current, ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली डिफरेंट स्केलर क्वांटिटीज हैं जो आपको नजर आएंगी। ठीक है जी, समझ आ रही है? सर जी सर, जो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें डायरेक्शन होती है? उसमें बेटा आपके पास ये होता है कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये होता है कि करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। आप सिंपली डीसी करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें यहाँ पर, ठीक है। और अब दूसरी बात, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में भी आप वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करता, वो वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो नहीं करता वो, तो वो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। ओके सर। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वेक्टर नहीं है। वरना डीसी करंट भी एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन वेक्टर के रूल्स फॉलो नहीं करता, हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करेगा, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज दैट वी हैव? यहां तक सबको क्लियर है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू विल डू इज यू विल choose a scale, and a suitable scale here would be that 1 centimeter represents 5 meter per second. ठीक है,
हाँ, but they'll specify, they'll ask you to draw a scale diagram, then you'll have to draw a scale diagram. Okay, unless and until they ask you to do whatever you want, but if they specify that you have to use a scale diagram, we'll do questions on that as well, inshallah. ठीक है, तो आपको scale diagram ही choose करना है. तो आप इसको कैसे represent करेंगे? आप पहले scale choose करेंगे. What you'll do is you'll choose a scale, and you will write here that 1 centimeter represents 5 meter per second. ठीक है? And you will use अच्छा, ये north ये है, आपको वैसे तो वो ग्रिड बना के दे देगा उससे. This is east, this is west, this is south. North east इस डायरेक्शन में होगा 45 डिग्रीज पर, कहीं यहाँ पे. So what you'll do is आप प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर को रख के यहाँ पे आप 45 डिग्री के एंगल पे 4 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे. क्योंकि आप जो आपको स्केल दिया होगा ना, आप 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 सेंटीमीटर बनता है. ये जो आपको 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अगर 1 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकंड की इक्वल है, तो 4 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकंड की इक्वल होगा. समझ आ रही है? So what you'll do is that you will represent it like this, and you'll draw an arrow as here like this, and you'll say that this is 45 degrees, and you'll draw a line of 4 centimeter to represent this vector. इस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Is that clear? अच्छा, उसके बाद adding scalars and vectors is different from each other. Adding scalars is very easy. ठीक है, as we have seen here. अभी तक हमने बात की है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है 5 की. ठीक है, हमने सबसे पहले ये बात की है. Understand that scalar quantity is a magnitude and that vector quantity has magnitude and direction. ये सबको clear है? Then we have talked about, know that the following quantities are scalar: distance, speed, time, mass, energy, temperature. And know that the following quantities are vectors: displacement, force, weight, velocity, acceleration, momentum, electric field strength और gravitational field strength हम पढ़ेंगे आगे जाके. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड 10 में. यस, इसी कोर्स ऑब्वियसली जो ग्रेड 10 के जब उस पे आएंगे. और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम रिसेंटली अभी इन्हीं चैप्टर्स में आगे जाके पढ़ेंगे, राइट? एंड आई एम गोना टॉक अबाउट डिटरमिन बाय कैलकुलेशन और ग्राफिकली the resultant of two vectors at right angles. So we'll talk about that. ये आप लोगों ने क्लास 9 में भी जो लोग हैं, आप लोग स्कूल्स में तो पढ़ चुके होंगे. ठीक है, अच्छा जी, we have here determine by calculation graphically the resultant of two vectors at right angles. We'll see that, right? So let's move ahead. यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक field strength, and you can also write here gravitational field strength, right? All of these are vector quantities. ठीक है, अच्छा, उसके बाद how do we add scalars? I'm going to talk about addition of scalars, right? स्केलर्स को तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं. आप 200 ग्राम मास में 100 ग्राम मास ऐड कर दें, आपके पास 300 ग्राम मास हो जाएगा. So for example, you add 200 gram mass into 100 gram mass. ठीक है, and it becomes 300 gram mass, right? Similarly, you can add temperatures 28.4 degrees Celsius plus 15.6 degrees Celsius, right? उनको आप सिंपल ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो आप सिंपल इसको ऐड करें and this becomes 44 degrees Celsius, right? अच्छा, इसी तरह से
अब स्केलर्स की एडिशन बहुत आसान है, लेकिन वेक्टर्स इस तरह से इतनी आसानी से ऐड नहीं होते क्योंकि उनकी डायरेक्शंस होती है रयान, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपके पास यहां पे एक बॉक्स है, राइट, ठीक है, और आप यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 10 न्यूटन्स, और आप यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 4 न्यूटन्स, एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स हियर व्हिच इज 5 न्यूटन्स, राइट। You are applying a force 10 Newton, 4 Newton and 5 Newton, right? ठीक है, हम एटीपी भी करेंगे पास्ट पेपर सेशन में, और दरम्यान में मैं आपको कुछ बताता जाऊंगा एटीपी का भी, ठीक है, बट पास्ट पेपर सेशन में हम पूरे एटीपी करेंगे, एटीपी P1 P2 फुल थॉरो। अच्छा, दिस इज व्हाट वी हैव 10 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो इसका अगर आप देखें तो राइट की तरफ आपके पास 14 न्यूटन है, 10 + 4, और लेफ्ट की तरफ आपके पास 5 है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगी रयान, ठीक है, it's going to get subtracted. So we have 10 + 4 - 5, and that is 14 - 5, which is +9 Newton. So this is how you will add vectors when you have vectors like this. मतलब ये अभी एक 0 पे है, एक 180 डिग्री पे, this is at 0 degrees and this is at 180 degree. अच्छा, अगर आपको एक बॉल यहां पे नजर आए और उसका वेट उसने दे दिया है, वेट इज अ वेक्टर 500 न्यूटन, एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस व्हिच इज एक्टिंग हियर। एयर रेजिस्टेंस होता है कि वो कितना एयर उसको रेजिस्ट कर रही है, इट्स फ्रिक्शन। सो द रिजल्टेंट इज 500 - 300, तो मैंने वहां पे उसको 200 कह दिया, राइट। सर जी जी जी, सर डाउनवर्ड फोर्स के साथ पॉजिटिव क्यों लगाया है? मैंने नीचे वाली फोर्स को यहाँ पॉजिटिव ले लिया, ऊपर वाली फोर्स को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, मैं वैसे ही बताना चाह रहा हूँ, वरना तो मैं किसी एक को तो मैंने पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना मुझे, ऑब्वियसली। जी। तो वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास 500 - 300 है, दिस इज गोना बी 200 न्यूटन, राइट। दिस इज द रिजल्टेंट दैट वी हैव। अच्छा, लेकिन वेक्टर्स को एंगल पे ऐड करना थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके सिलेबस में उन्होंने सिर्फ 90 डिग्री पे, सिर्फ 90 डिग्री कह दिया आपको। एक तो ये सिंपल है ना बिल्कुल, एक है आपके पास वेक्टर एडिशन एट 90 डिग्री, तो वो आपको स्केल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए, डिटरमिन बाय कैलकुलेशन और ग्राफिकली, ग्राफिक का मतलब है स्केल डायग्राम, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स। अब सिंपल कैलकुलेशन में तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, बिकॉज 90 डिग्री पे हो तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। फॉर एग्जांपल, आपके पास वेक्टर एडिशन दो तरीके हैं, ठीक है, एक हेड टू टेल रूल होता है और एक पैरेललोग्राम होता है। तो वील टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहां पे एक वेक्टर है, दिस इज 5 न्यूटन, this is 4 Newton, and you have a vector here which is 3 Newton, right? And you want to find the resultant of this, right? तो आप पाइथागोरस लगाएंगे। अगर आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर आप देखें तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बनता है, ये इसके पैरेलल है और ये इसका रिजल्टेंट बन जाता है, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन के साथ। दिस इज 4 न्यूटन। देखिए, एक चीज इधर जा रही है, एक चीज इधर जा रही है, तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे एंड हो गया,
यहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इसके सामने, और यहाँ पे एंड हो गया. So you'll simply apply h square is equal to perpendicular square plus base square. So we have perpendicular square here 4 square, base is 3 square, and you get 25. Answer is 5. लेकिन इसको हम एज अ पैरेललोग्राम किस तरह से देखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा. There are two ways to recognize this. One is head to tail rule, right? Head to tail rule का idea है. And the other one is parallelogram law of vector addition using right angle. One is head to tail rule, and the other one is the parallelogram law of vector addition. ठीक है, पहले मैं हेड टू टेल रूल बता देता हूं. हेड, ये आपने पढ़, आइडिया है ना सबको थोड़ा सा इसका. हेड टू टेल रूल. What is head to tail rule? For example, you have a vector here which is vector A. ये आपके पास एक वेक्टर A है. Online students, are you getting what I'm saying? See, Anas, Anisha, Imran, Minahil. You have here a vector A, and you have here a vector which is vector B. बस 2-3 मिनट, ठीक है. You have a vector A here and you have a vector B. अच्छा, अब आपने इसका रिजल्टेंट फाइंड करना. You have to find the resultant. Head to tail rule ये कहता है the head of the first vector joins with the tail of the second vector. The head of the first vector joins with the tail of the second vector. ठीक है, जैसे इसका मैं उठा के इसको, अगर ये मेरे पास A है, मैं उसको उठा के यहां पे रख देता हूं. ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर A है, ये मेरे पास वेक्टर B है. The head of the first vector joins with the tail. मैंने इसको वेक्टर 1 कह दिया था, इसको वेक्टर 2 कह दिया. Joins with the tail of the second vector, and the tail of the first vector and the tail of the first vector joins with the head of the second vector to give the resultant. The head of the first vector joins with the tail of the second vector. ठीक है, and the tail of the first vector joins with the head of the second vector to give the resultant. और ये डायरेक्शन अगर आप उसको वेक्टर 1 कह दें और इसको वेक्टर 2 कह दें तब भी यही आएगी. आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं इसको वेक्टर 1 और इसको मैं वेक्टर 2 कह दूं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं इसको वेक्टर 1 कह दूं और मैं इसको इस तरह से बना दूं, ठीक है, एक सेकेंड. अगर मैं ये वेक्टर 1 है और ये मेरे पास वेक्टर 2 है, तो the head of the first vector joins with the tail of the second vector, and the tail of the first vector joins with the head of the second vector to give you the result. तो देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है. ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर बन गया, सेकंड वेक्टर बन गया और ये रिजल्टेंट बन गया. दोनों सेम डायरेक्शन में. जी, तो डायरेक्शन कैसे आई है? डायरेक्शन इस तरह से आई है कि आप एक फोर्स ये लगा रहे थे, एक फोर्स ये लगा रहे थे, एक ब्लॉक को आप पहले आप यहां खींच रहे थे और थोड़ा सा इस तरफ से खींच रहे थे, तो ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा. हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जॉइंस विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जॉइंस विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. उससे हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी. आप एक देखें ना, एक चीज को यहां से खींच रहे थे और एक चीज को आप इधर से भी खींच रहे थे. आपने इस चीज को उठा के यहां पे रख दिया, इस चीज को उठा के, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है, तो आपने इस टेल को इस हेड के साथ ज्वाइन किया तो आपके पास रिजल्टेंट आ गया. मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है. So I'm going to write here that if two vectors are added using head to tail rule, ये मैं कल लिख देता हूं. चलो